So now let's continue with unemployment. Now, these all factors which you're talking, like, you're discussing about it for a long time. It is taking a lot of discussion, a lot of understanding of these terms. Now, if you just talk about unemployment, this is the place where people do not have work, even if they are searching for work. There is always likely to be some unemployment with any economy as people change jobs. However, most governments try to keep unemployment low. This is because high levels of unemployment may cause what problems? Can you guys say me what problems can happen if there is unemployment? Huh? Poverty, There will, okay. there will be increased crime and tax evasion too. Crime, tax evasion. Okay. What else? Illiteracy. Illiteracy can be cause of unemployment. People will demand less. Okay, fine. Acceptable. Yes, you're saying something? People will demand less goods. Okay, less demand. Will Then, cause deflation because of sorry, your voice got but will it cause deflation because of that? deflation, yes, it can. Less demand, not deflation, they can come towards a stagnant point. Economic growth will stop, kind of stop. Stagnant. जैसे कि लोग हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है. Political problems and all that stuff will create that. हमारे पड़ोसियों को सीरियस बहुत प्रॉब्लम हो रही है मालूम. हमारे जो पड़ोसी है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. Their country is into a political crunch. Their country is they have talent but they cannot utilize it because of the resources, because of the economy around. They cannot they're having huge problem with unemployment, and I'm not saying it sarcastically. I'm saying it in reality. They are facing problems. Okay, now just see, and also just think about it. When unemployment is most, right, the biggest benefiter out of this is political leaders. When unemployment is most, that's an opportunity for those leaders, political leaders. देखो, आपकी रैली में अगर कोई आ रहा है ना, जॉब जाने वाला आदमी नहीं रहेगा वो. एक पॉलिटिकल रैली में no person will go sacrificing his day job or something like this and go in the rally. A person who is unemployed only will go in that rally. Believe me. Okay. और उसको एक दिन का खाना मिल जाएगा, एक दिन के लिए कुछ पैसे भी मिल जाएंगे. That is enough for him. That is what he wants. That is what a person wants. He needs his basic needs fulfilled. Whether the government does it, whether the some other group does it, he's fine with it. He wants shelter, food, clothing. Three basic things which we studied throughout our life. This may lead to increased taxes on other workers, reducing their spending power, because there is a lot of बड़े तबके के लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो जो छोटे लोग काम, मतलब there is a small group which is working, on them the taxes will be high because they have to give that benefit. And when you see this, all goes in hand to hand. जैसे कि it's kind of a wheel, okay, and there are spokes of the wheel, and it's a process. If one thing goes off, there's a problem there. Just see this. You want to have improvement in your life, okay, or
people say that बहुत सारे jokes भी है इस पर, लेकिन I am not going to go on that side. Let's just think about, you know, want improvement for the people, okay? Now to have improvement of the people, they should be having jobs. And for them to have jobs, there should be jobs creator jobs, okay? People who create jobs. Now when people who create jobs, how are they able to create jobs? With really good education or experience. Really good education or experience. And with this education only, they'll have the improvements. लेकिन क्या हो जाता है, ये चीज जो है कहीं ना कहीं मिस हो जाती in the cycle. In the cycle, this gets neglected, or this is something which has been framed by the market in such a way that it is a luxury, but it's not a luxury, it is a requirement, it is really required. अब जैसे कि देखो, अगर suppose I am also advocate of this particular thought, unemployment does not happen because of the government. Unemployment does not happen because there are no jobs or there is no employer for it. Unemployment is not because of that. Unemployment is because humans are lazy. Unemployment is because humans are lazy. अगर सपोज किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, जो आज के दिन में इजीली अवेलेबल है, हर एक के पास अवेलेबल है, अगर नहीं है तो मैं मानता ही नहीं, आई वोंट एग्री टू इट, कि अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, एवरीबडी हैज एक्सेस टू द इंटरनेट टुडे. अगर नहीं होता, फॉर एग्जांपल, people out of the slums also have a mobile phone and an internet connection. In today's day and age, when you have all that, and still you say that I'm not having employment and I'm struggling for employment, that's a lie. Big time lie. If you want to learn something, if you want to educate yourself, the internet is open for it. The only thing is you don't want to study, that's why you're not studying. अब जैसे कि for example, you will find people in your life that वो बोलेंगे कि सर मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है, कैसे करूं? Okay, if someone is coming and asking you this question and he's having a phone and internet in his hand, it means वो जो है ना, क्या है, लेजी है, सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेकर. सीरियस नहीं है वो भी चलो ठीक है, लेकिन लेजी है. क्योंकि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश अगर वो गूगल पे सर्च कर ले तो एक सजेस्टेड वीडियो सीरीज मिलेगी उसको. इफ यू वांट्स a tutor in English, he'll find a person in English only, and if he wants a tutor in Hindi, he'll find a tutor in Hindi to teach you English. There is already series and series of videos already there. उसको कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट इंटरनेट एंड मोबाइल रिचार्ज. रिचार्ज से मतलब वो चार्जिंग का रिचार्ज, ठीक है. फ्री वाईफाई भी हर जगह मिल जा रहा है आजकल. यू कैन लर्न, एंड वंस यू लर्न, वहीं पे आपको मिल जाएगा कि जॉब कैसे अप्लाई करें, वो वीडियो भी अवेलेबल है. दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द नेट. यहाँ पे करना क्या है, बस आपको एक अंदर से जुस्तजू होनी चाहिए कि यू वांट टू डू दिस, एंड इफ यू वांट टू डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट. You will find people across saying, अरे मेरे को ये करना था, वक्त हालात नहीं थे, नहीं करा मैं, हमारे वक्त पे इतना सब इंटरनेट नहीं था, नहीं तो हम ना पढ़ लेते थे. ये भी अगर कोई बोल रहे हैं ना, वो सब अपने बहाने और अपने लेजीनेस को बयान कर रहे हैं. अरे जब नहीं था अब तो है, अब पढ़ लो. पढ़ने की क्या उम्र है, अब कहाँ पढ़ते हैं भाई. नहीं, does it happen or not? Okay, for example, I'll give you example of my mother only. She has an iPhone. Her elder sister, okay, she said me, or she said someone in the home that just book a cab. My mother's elder sister opened her phone, booked the cab,
and the cap came down. Now both come from the same background. My mother kept looking to my aunt and saying, how could she do that? And she also did not went to school and all that stuff. So is that time you did not learn does not mean that this time also you don't learn. Okay, how to book a cab, how to do a banking transaction. अरे ये देखो ना कैसा करते banking transaction बोल के अगर आपके हाथ में दे दिए तो नहीं, it should be done by themselves. They can learn it. ऐसा कर ले सीख ले सकते हैं ना. कोई भी चीज अगर कोई ड्रामा देखना है तो फिर कैसा सर्च करके देखते, वो तो मालूम है, उतना तो मालूम हो गया ना, थोड़ा और भी सीख लो. Now I'm not going to talk about that, but unemployment in here, if you see person on the television or a news channel coming and saying कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, हमको जॉब ही नहीं मिल रही है, कट ऑफ ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया है, हमको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, that is just a propaganda. That is just for that political party. There is a political motive behind it. क्योंकि आप जैसे सबके लिए बैठे हुए नहीं है. You just find out the best thing which you can do and keep on doing. Internet ऐसी जगह हो गई है, you can be a better version of yourself any day by training yourself and improving yourself. There are so many people on the internet. मेरे को खुद कितने सवाल आते रेगुलर डेली बेसिस पे, यू डोंट नो. सवाल मैं जवाब भी देता भी हूँ लोगों को. In that manner they know, okay, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, then they go. So unemployment here is what. आप फिर बोलेंगे सर ये सब बात आए, जॉब अप्लाई करने गए तो कोई भी एक जॉब को अप्लाई करे तो there are already thousands of candidates who have already applied to it. अरे तो apply more, search out for better things, go walk out, search for better things, you will find it. If you are not able to find it, it means आपकी search बराबर नहीं थी. You do not search in the right way. You do not search in the right place. Okay, and I have no place of sympathy for them. Empathy हो सकती है फिर भी, लेकिन नहीं. High employment makes it easy for business to find employees as they are ready to pool labor to draw on. It may reduce amount of wages that need to be offered to attract new members of staff. This is when there is unemployment. आप उनको कम पैसे देते हैं, कम पैसे देकर जो है उनसे काम करा लेते हैं. Existing staff may be willing to take lower pay increases as it will be difficult for them to find alternative work. ये एक खौफ रहता है लोगों में, ठीक है, खौफ कि अगर मैं ये जॉब छोड़ दिया तो दूसरी जॉब नहीं मिलेगी. ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया आ गया मेरे दिमाग में अभी. दिस कैन बी अ रियल आइडिया. जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर मैं ये जॉब छोड़ा तो मुझे दूसरी जॉब मिलना मुश्किल है. अगर आपके पास ये थॉट प्रोसेस आया, okay, if someone is thinking in this manner, it means that he is not educationally capable, he is not skillfully capable. और ऐसा भी हो रहा है कि वो कंपनी आपको जो है डिपेंडेंट बना रही है इंडिपेंडेंट बनाने का. जस्ट थिंक अबाउट इट. अ कंपनी इज मेकिंग यू डिपेंडेंट एज एन एम्प्लॉय ऑन देम, कि हम ही है आपको जॉब देने वाले, बाहर गए तो कोई नहीं देते है. These type of things are toxic. These type of things are worst which can happen to any human being. जो toxic relationship at work, toxic workplace जो बताते, इसी का जैसे होता है. वो लोग आपको बताते कि we are doing a favor on you, हम लोग आप पे एक एहसान कर रहे हैं. But is it something like that? No, right? Huh? It's the opposite. It's the opposite. Yeah, because People think exactly. That is what people should understand. And I have seen many people like this who are stuck in their job just because of this. अगर ये जॉब छोड़ दिया तो दूसरी कहाँ मिलेगी? अरे मिलेगी भाई, दूसरी अगर तुम देखोगे तो मिलेगी, पक्का मिलेगी. अगर आप काबिल हो तो पक्का मिलेगी. दूसरी जॉब नहीं मिलेगी उसका मतलब यह है कि आप आलसी हो, आप कुछ नया सीखना नहीं चाहते. आलिया समझ में तो आ रहा ना पक्का? नहीं सवाल सर कई को ऐसा बोल रहे हैं आप बोल गए.
बहुत बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, जो लोग बोलेंगे कि ये जॉब छोड़ दिया तो फिर दूसरी जॉब कहाँ मिलेंगी। दैट्स अ थ्रेट फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। देन कम्स इन बैलेंस ऑफ, ये हम लोग फिर से करने वाले, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, अलग से फिर से डिटेल में है अभी। तो व्हाट, लेकिन इसके सवाल अलग रहेंगे ना, इसके सवाल अलग रहेंगे ना। So let us go towards that directly. Like this fiscal policy. Fiscal policy is for how long? Fiscal policy. अब फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में फर्क क्या है? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। Fiscal policy is done through taxation and all, but monetary policy is done through central bank. ठीक है, तो काम क्या Through रहता क्या? मॉनेटरी पॉलिसी का काम रहता क्या ज्यादातर? inflation. They'll reduce the inflation. Reduce inflation. They will work on the bank rates, exchange Yeah, rates, repo rate, yeah. reverse repo rate, ये सब होता है LRR, मॉनेटरी पॉलिसी, CRR. जो आरबीआई बनाता है Yeah. हमारे पास। आरबीआई बनाना चाहिए हमारे पास, लेकिन उसमें भी बहुत इंटरवेंशंस होते हैं। एंड फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स टैक्सेशंस, टैक्सेशन कलेक्शन प्लान एंड स्पेंडिंग प्लान, जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री रूल रेगुलेशन से पास होते हैं। Now in fiscal policy, what is the income? Tax is the income, the various sources of tax. What is the expenditure? Expenditure for the public. रोड्स बनाओ, जगह जगह ऐसे बनाओ ताकि पब्लिक का फायदा हो। ओके, देन coming towards budget deficit. Budget deficit in the sense, हाँ, budget decreasing नहीं, Then आप the सपोज, expenditure is more than income. yes it is expenditure more than income, that is a budget deficit. But understand this, budget, when the word budget comes, budget is something which is futuristic, not present. तो आप जो फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाए हैं, सपोज फॉर द नेक्स्ट ईयर यू हैव मेड अ प्लान फॉर द ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, and your taxes which you are collecting is less than what you have planned to spend. The taxes which are coming in is less when compared to what you plan to spend, so that is a budget deficit. Okay, and one country which is always in a budget deficit, can you guys give, कल की क्लास में बोला, आप लोग रिकॉर्डिंग देखे तो मालूम होता। हाँ, इंडिया अच्छा देश है यार, उतनी भी डेफिसिट। USA. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स यूएसए, जो हमेशा हर वक्त बजट डेफिसिट में अगर है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमेशा बजट डेफिसिट, इतना बजट डेफिसिट कि जितना डेफिसिट वो लोग जाते उतना लोन उठाते रहते, और लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे अभी वो लोग। उन लोग की लोन, ओके, डेट सीलिंग लिमिट बढ़ते जा रही, साल बा साल बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही, वो लोग खुद ही कर ले रहे रूल। अब क्या बोलते हो उसको, फॉर एग्जाम्पल, चित भी मेरा पट भी मेरा, दैट टाइप ऑफ हिसाब। और एक क्या है उसका मिसाल, ये चौकीदार भी वही, चोर भी वही। थिंक अबाउट, रूल बनाने वाला भी वही है, रूल का उल्लंघन करने वाला भी वही है, फिर सजा को माफ करने वाला भी वही है, सब पूरी मिली जुली भगत है। इसलिए तो यू गाइस गो रिसर्च अबाउट यूएस डेट सीलिंग। In fact, last year I was making a video. I made the video also, but did not edit it and upload it. And I don't know why I did not upload it. बहुत पुरानी बात है। खैर, आज भी लोग वो यूएस डेट सीलिंग के ऊपर वीडियो बनाते हैं और लोगों को अभी मारे यूएस डेट में है। अरे वो तो बहुत सालों से डेट में है। अब जैसे कि देखो,
जैसे कि कोविड आया, कोविड आने पे हर ज्यादातर लोगों को बेनिफिट्स दिए गए, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहाँ से दिए गए? टैक्स के पैसों से। क्या उतना टैक्स कलेक्ट हुआ? नहीं, बट बेनिफिट्स वर गिवन। अब जैसे कि obamacare.org, ओबामा केयर, ओके, दैट वाज कैंपेन व्हिच स्टार्टेड। मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी अच्छी देना, फ्री में देना या कम पैसों में देना, दैट वाज द एजेंडा एंड प्रोपेगेंडा ऑफ इट। कहाँ से देंगे वो पैसे? अपने जेब से, टैक्स। एंड दैट्स व्हाई दे आर in deficit most of the time. Budget surplus, government is spending is lower than government income. लोग के पास पैसा आ जाता है लेकिन स्पेंड नहीं करते लोग, पब्लिक पे स्पेंड नहीं करते, अपने बीवी बच्चों पे करते। गलत है क्या वो? ओके, okay, made note of it. Monetary policy. Okay, now in monetary policy, what do? You fix in the interest rate so that there is a gap which is getting fulfilled according to the market needs. Interest rates are fixed up, like in some countries such as the UK, interest rates are set by the central bank, that is Bank of England in the UK. In other countries, rates are set directly by the government, like RBI is government only, right? अब आरबीआई का गवर्नर जब उसके नोट पे साइन करने वाला, तो फिर वो पूछेगा ना कि करूं या नहीं साइन प्रेजेंट हुकूमत से। That's why Raghuram Rajan left also, because he was not having independence or something like that. His rules, regulations were not taken into consideration. Reserve requirements. You know what is a reserve requirement in a bank? CRR. SLR, हाँ, CRR. CRR, दैट मिनिमम इतना कैश तो आपको रखना पड़ेगा। वो कितना कैश रखना पड़ेगा ये लोग डिसाइड करते हैं। The reserve requirements are decided by RBI in India and the Bank of England in the UK. Just think about it, Bank of England in the UK. Okay. ये फुटबॉल में, ओके, फुटबॉल में या क्रिकेट में ये टीम्स जो है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, ये लोग कुछ बड़े टीम्स है या छोटे मोटे टीम्स है? मोस्टली छोटे है ना। इंग्लैंड बड़ी है ना, इंग्लैंड में क्रिकेट में भी स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स छोटे टीम है, इंग्लैंड बड़ी टीम है। आपको मालूम क्यों बड़ी टीम है इंग्लैंड? हालांकि वो लोग every country that you mentioned lies in the England. that Every country you mentioned lies in the England. it lies in UK, but they are connected with England, but they lie in UK only. लेकिन तो यूके में इंग्लैंड क्यों पावरफुल है? आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स भी तो रहना ना। रहना चाहिए ना, उनको भी तो ब्रिटिशर ही बोलेंगे ना। आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड यहाँ से आओ, वेल वो भी तो ब्रिटिशर ही हुए ना। लेकिन वो लोग उतने पावरफुल क्यों नहीं है जितना इंग्लिशमैन पावरफुल है? मैं बताता हूँ आपको, छोटी छोटी सी हिस्ट्री। जब अंग्रेज एक्सप्लोर करना शुरू करे, सॉरी एक्सप्लॉइट करना शुरू करे, तो पहले इंडिया को नहीं आए वो लोग, पहले स्कॉटलैंड को गए।
पहले स्कॉटलैंड को गए, फिर यूरोपियन ऑल दो स्टफ दे डिड, जहां पे वो लोग जोर नहीं चला सके. तो बहरहाल they started exploiting people there around only, and now let me just share with you another thing. They keep doing it even today. Now what they do is, just think this. जो प्लेयर्स, ओके, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, जो प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, ठीक है, जैसे कि स्कॉटलैंड में या आयरलैंड में कोई एक बहुत अच्छा प्लेयर है, आयरलैंड का एग्जाम, बहुत एक अच्छा प्लेयर है जो अच्छा खेल रहा है क्रिकेट या फुटबॉल, तो क्या करते हैं, उसको इंग्लैंड बुलाते, इंग्लैंड की नेशनैलिटी दे देते, इंग्लैंड की नेशनैलिटी दे देते. हाँ, Not only in England, they also see players from Africa and यस, Asia. फ्रांस करता है ना वो, फ्रांस करके लास्ट टाइम वर्ल्ड कप भी जीता. When इंग्लैंड बहुत ज्यादा कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एक प्लेयर है ऑयन मॉर्गन, वो आयरलैंड का था, ठीक है, फिर वो इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप भी जीता है. तो क्या हुआ वो कि जो नजदीकी देश है उसका टैलेंट एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रखता हो और बाकी के लोगों को ऐसे ही छोड़ देता. हालांकि देखा जाए तो दोज आर द प्लेसेस वेयर क्रिकेट स्टार्टेड फ्रॉम, दैट्स द प्लेस वेयर क्रिकेट स्टार्टेड फ्रॉम. ऑल टीम्स शुड हैव बीन पावरफुल, बट इट्स नॉट. कितने पॉलिटिकल फैक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए. वेल, द बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो उसी हिसाब में जैसे कि देखो, बैंक ऑफ इंग्लैंड इज सेटिंग द रिजर्व रेट्स ऑफ द यूके. नाउ व्हेन इट इज यूके, इट मींस स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स सब इंक्लूडेड हो जाते हैं. सबके बैंकिंग रेट्स, रिजर्व रेट्स हुई सेटिंग, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो लंदन में है. ऐसा समझो कि इंडिया रूल बना रहा है, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी उसको फॉलो कर रहा है, वैसा हो रहा है उधर. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग सेलिंग इट्स ओन बॉन्ड्स, ये सब भी गवर्नमेंट विल कम इन एंड से व्हाट यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू डू. Now let's come to its economic theories only. Classical theory for economists, what do they say? The government does nothing, and the businesses which run buying and selling, they will only increase the production or increase the economy of the country. Whereas the Keynesian view, the demand side view, what it says, government needs to manipulate the level of aggregate demand with the economy so that it can come towards a stable stuff. This was because if left to itself, the economy could get stuck at unfavorable equilibrium points. It had happened in the Great Depression, which happened in 1920. पहला वाला क्लासिकल थियरिस्ट क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट को करना भी नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है, बाइंग, सेलिंग, डिमांड, सप्लाई वो लोग ही मैनेज कर लेंगे. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये बाइंग, सेलिंग, डिमांड, सप्लाई के बेस पे फिर डिप्रेशन आ जाता, फिर रिसेशन आ जाता, बड़े परेशानियां होते. इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करके उसको सही करते रहना चाहिए. Okay, best example is the recession in 2008, how the government gave a bailout to Goldman Sachs. You guys know about it? 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया था. कल बात करेंगे इसके बारे में. कल हम लोग हुआ तो मूवी भी देखेंगे. मूवी इन द सेंस डॉक्यूमेंट्री मूवी, नॉट मूवी वाली मूवी. ओके, this is supply side monetarist view, returned with the classical view, and there was only one equilibrium point in the economy, the point where supply equals demand in all markets in the economy.
The only reason that the economy does not find this equilibrium is because it will be hindered by market imperfections. The role of the government is therefore to remove these imperfections, allowing the economy to naturally find its ideal equilibrium. अब market imperfections क्या है? Inflation, balance of payment, fiscal policy, government spending and tax, price fixing, minimum wage rule regulation, regulations of market, abuses of monetary power, monopoly power. ये सब क्या है? ये सब factors रहेंगे economy में. That's what the monetarist side of view says about it. Then ये बहुत पुराने एग्जाम्पल है. Let's just come back to it, क्योंकि कल कैसे भी हम लोग या 2008 के रिसेशन पे बात करने वाले हैं, तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर नाउ. Now achieving policy objectives, growth, running a budget deficit, increasing the availability of factors of production. This is a classical Keynesian response to a recession. The government pumps money into the economy, triggering increased aggregate demand. तो जब कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, the government should intervene, should pump in money, should put in the money in the economy so that the economy comes back. जैसे कि 2008 के रिसेशन में how they came up with a bailout plan और बचा लेते हैं उन सब लोगों को, ताकि लोगों का ट्रस्ट रहे, इकोनॉमी रहे, कोलैप्स नहीं हो, इस वजह से बचा लेते हैं. इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, मतलब वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग वो लोग जो रॉ मटेरियल्स यूज करने वाले हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं उसको इजीली अवेलेबल कर देते, कम प्राइस पे करते, सब्सिडीज देते, सो दैट दे गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन इट. कटिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड अदर पॉलिसीज सो दैट they are doing good in that. Now I want you guys to be faster in your notes. Coming up towards unemployment, there is first an unemployment called cyclical unemployment, which is something which happens according to the cycle. Like every few years, you know, there will be unemployment, there will be boom, there will be a bust. When there is a bust, there will be unemployment, where less people will be having a job. That is because of cyclical unemployment. Then frictional unemployment. Frictional unemployment is like, suppose I am leaving a job and I am going to join a job in the next few months. So those few months is called unemployment for me, and that is a frictional unemployment. Okay. And then structural or technological unemployment is that the technology which you are working in changes. Technology which you're working in changes and you're not skillful enough to work on it. So what you have to do, you have to upskill yourself, learn those technology, and then implement it to avoid structural or technological unemployment. For example, people who were mechanics or, you know, technicians of Nokia phone, they had to upgrade themselves to Apple. Otherwise, they are unemployed today. And what's the reason? Structural or technical unemployment. Okay, then comes seasonal unemployment. Seasonal unemployment is who are selling mangoes off season, they are not having any unemployment. They are unemployed. Those who sell mangoes, in the sense, those who have that आमबाग जिसके पास है, वो लोग रहेंगे प्रॉब्लम, वो लोग रहेंगे unemployed. Then real wage is found in industries with a highly ionized union negotiations. Monitors would see this market and would look to reduce union powers. Now this will happen when the union stuff comes in and says that you have to go on a strike, you should not work, and stuff like this. That is real wage unemployment. Then comes inflation. It's just furthermore to our discussion only. Demand pull inflation. When demand is increasing, then the inflation will increase. Whereas suppose the cost of production increases, then also inflation increases. Then if suppose you're buying something from outside and selling here, so because you've imported it from outside, the cost of that particular good also increases. And then monetary inflation here is increasing the money supply. And when the money supply increases, the purchasing power decreases. And when purchasing power decreases, inflation automatically increases. Expectations effect. In order to protect themselves against these rises, wages and prices will therefore be increased. This may lead to an inflationary spiral where inflation occurs because there is expectation that it will occur. Because as a cycle it goes on, inflation will come as a cycle only. And when you expect that
It's going to come. It will come. You are going to make situations like these, then inflation is coming your way. Now, there are a few examples on inflation and unemployment combined. And then there is balance of payment. Balance of payments we did not study there. मतलब ऊपर नहीं पढ़े थे. It's just a extension from it. Balance of payments is like you are buying and selling from outside. Outside in the sense another country. When you are buying more from another country, what happens? You are in a deficit when you're buying more and selling less. And when you're selling more, which is you are exporting more, that is a good sign for the economy. The more you export, it is good for you. The less you import, it is good for you. Countries like China export a lot, import less. India, import export almost equal पे ही चलता, लेकिन ज्यादा import ही हो जाता फिर. Countries like the Middle Eastern Gulf region, they export a lot in one way. Like, they'll export oil, natural gas and stuff, but import almost everything to eat, they are importing only. Okay. And in that manner, they would be having a deficit or a surplus. And for an economy to grow, export should be more than imports. Is that clear? फिक्स अब सपोज आप जॉब छोड़े, एक 6 महीने काम नहीं कर रहे, एक 6 महीने बाद आप वापस जॉब पे जा रहे, तो वो 6 महीने के टाइम को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब के स्विचिंग में जो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. So now we've come towards the end of this session. In fact, end of this chapter. Tomorrow we are going to continue talk about some more examples on this. And anyhow, chapter 8 is again economics only. Chapter 9 is going to be different. So we'll end this session and start with management accounting now. Okay. If you have any doubts, you can just ask me in the starting of the management accounting session.